नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा कि हाँ, मैं आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले नर्मदा रिवर, जी हाँ, उसका ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोगला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसे पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमारा 2018 का पार्ट 1 फोरनून सेशन का फर्स्ट पार्ट 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। रेस्ट इज रिमेनिंग, जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं। ये रहा ब्यूटीफुल स्क्रीन के ऊपर, ये रहा द क्वेश्चन ऑफ द डे स्टार्टिंग फ्रॉम आर फर्स्ट वन। x1 x2 be a two independent normal random variable with means mu1 and mu2 and a standard deviation sigma 1 and sigma 2 respectively. Consider y is equal to x1 minus x2, mu1 is equal to mu2 is equal to 1, sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to 2. Then y is normally distributed with mean and variance 0 and 1. Y is normally distributed with mean 0, variance 5. Y has mean 0, variance 5 but not normally distributed. Y has mean 0 and variance 1 but is not normally distributed. So choose the correct option for this. Okay, so here on that note, we have variance or x is equal to expectation of x square minus expectation of x का square, variance of x plus y is equal to what is we have according to the formula, variance of x, variance of y, 2 times of covariance of x and y, and covariance of x y is equal to expectation of x y minus expectation of x and y. So the y value is equal to x1 minus x2 whole, right? Mu 1 is equal to mu 2 is equal to 1, sigma is equal to 1 and 2. Then y value is x1 minus x2. So y is equal to mean of x1, mean of x2, mu times of y, mu times of x1 minus mu times of x2. So the mu times of y 1 minus 1 is equal to 0. So the variance of y is equal to, here on that contrary note, variance of x1, variance of x2, sigma 1 and 2 square. So the variance of y is equal to 1 square plus minus 2y square. 5. Sigma is what? Standard deviation, and the variance is equal to sigma square, right? So the value is to be correct. One is to be a Bombay, right? Next value. Now the next value, the value of integral of cyclic integral of double surface r dot n cap ds over the closed surface S bounding on the volume V, where r is equal to xi plus yj plus zk is the position vector and n bar is a normal to the surface S is. Okay, so on that control note,
आप देखेंगे ऑन दैट नोट हमारे पास फॉर्मूला है। वी हैव तो was divergence थ्योरम से हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 8 टाइम्स ऑफ यस ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द del a dv. So the here on that note we have f and cap yes triple integral del f dv. So the now the it is closed as a sphere is in closed interval. सरफेस कैसा क्लोज इंटीग्रल में है एंड वेक्टर आर क्या होता है एक्स आई वाई जे जेड के कुछ इस तरीके से होता है अगर मैं डेल टाइम्स आर निकालते हैं तो ओवर हैव डेल बाई डेल एक्स एक्स आई के साथ वाला आई जेड इक्वल टू 3 so here 3 times the volume of is 4/3 pi r cube but यहाँ directly volume so r t is triple in cross delta bar dv triple into is the 3 times v dv right now the next question में हम move apart करते हैं a point mass is shot vertically up from ground level with a velocity of 4 meter per second at time t is equal to 0. It loses 20% of the impact velocity after each collision with the ground. Assuming that the acceleration due to gravity is 10 meter per second square and the air resistance is negligible, the mass stops bouncing and comes to complete rest on the ground after a total time in second 1 to 4 infinity. Alright, on that continuing note, v is equal to u plus at. We have the equation over here. Acceleration gravity value 10 meter per second square in a negative hotspot probe. So here u upon g on that continuing node is to be a t. Right. So the total flight time t1 is equal to 2u by g. 2u क्यों? आपका जो है डबल सफर करना है क्योंकि ये बाउंस बैक कर रहा है और इसकी इक्वेशंस देखते हैं तो 2u1 अपॉन जी प्लस 2u2 बाई जी प्लस 2u3 बाई जी प्लस प्लस अप टू इन्फिनाइट सो द on that continuum 2 by g u1 u2 u3 plus up to infinity. So the u2 value is equal to 0.8 times of u1. u3 is equal to 0.8 times of u2. So 0.8 square u1 u4 is equal to 0.8 times of u3 is equal to 0.8 cube u1 is equal to 2 by g times of u1 0.8 u1 plus 0.8 square u1 plus. So the total infinite series में क्या होता है 1 minus r. So the time period क्या हो जाएगा 2 u1 by g
into 1.0.2. So the value is to be put at 10. Initially 10 meter per second is square u is equal to is equal to 10 meter per second is square. Say t is equal to 2 times of 4 by 10.2. So the total value is 4 second. 4 second is your right option. Charlie. The state of stress of point for body in a plane stress is shown in the figure below. If the maximum principal stress 10 kilopascal, the normal stress sigma y is tau xy. Sigma x दिया हुआ है, sigma y is to be unknown over here. Okay, so we have the formula over here. क्या sigma 1 2 equal to is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus minus square root of sigma x minus y by the whole square tau of xy square, right? So on that control node we have the values over here. Sigma x is equal to 100 kilopascal, sigma y यही तो कैलकुलेट करना है. सिग्मा 2 की वैल्यू दिया हुआ है 10 किलो पास्कल, क्योंकि आपका छोटा वाला है स्ट्रेस होता है प्रिंसिपल का. एंड टाउ ऑफ एक्स वाई दिख रहा है 50. पुट द वैल्यू एंड गेट ओवर इट. एंड 100 प्लस वाई अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 100 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर. सो द ऊपरी हुई वैल्यू आती है सिग्मा वाई इज इक्वल टू व्हाट 13600 upon 360, 37.78 megapascal. Are Charlie the right choice for this? La 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 la. चलिए. An epicyclic gear train is shown in the figure below. Number of teeth on the gear A and B, A, B, T are 20, 30 and 20. इसका 20, E is a 30 and D is a 20. Here C has a 80 teeth. Okay, 80 teeth. And inner surface on the inner surface and 100 teeth on the outer. चलो भैया, इसके 80 भी हैं, ये इनसाइड वाले. आउटसाइड वाले टी, आउटसाइड वाले कितने हैं? ये टीथ है आपके 100. ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा. इनसाइड आउटसाइड जनरली एक ही साइड होते हैं, क्योंकि आपका जो है इनर व्हील में जोड़ता है, लेकिन सी को ही ये एक हॉलो डिस्क टाइप से यूज किया हुआ है. ओके, तो दोनों साइड आपके खांचे बन सकते हैं. इफ द कैरियर आर्म ए बी इज फिक्स्ड एंड सन गियर ए रोटेट्स एट 300 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द आरपीएम ऑफ टी ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज. ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. चलिए देखते हैं. देखो आपको जो है सीधे सीधे क्या बनाना पड़ेगा माय डियर. आपको गियर ट्रेन के लिए अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा. n2 बाई n1 p2 बाई speed ratio. We know, we know on that node. So let's move ahead. Oh, okay, okay. चलो. So here on that node, so here
आप जो है मोशंस देखते हो। देन आप फर्स्ट में आर्म को रखते हो, फिर गियर नंबर ए, गियर नंबर बी, गियर सी एंड गियर डी। तो सबसे पहले आर्म को फिक्स करते हैं। तो 0 + 1 रिवॉल्यूशन गियर ए को दिया, तो डी ए बाई डी बी टाइम्स हुआ। एंड मूविंग अपार्ट गियर सी, तो here it is the TA to the TB, TB to the TC। तो उभरता हुआ सितारा निकला TC का, कौन सा, इनसाइड वाला पार्ट, सेम एज अ ड्राइवर टू द ड्रिवन इनसाइड TC ऑफ आउटसाइड बाय TD। सो यहाँ पे पूरा ही बॉडी आएगा। देन +X रिवॉल्यूशन जो है घुमा दिया, तो आर्म को जो है 0 ही रिवॉल्यूशन मिला। गियर 1 को +X माइनस TA/TB टाइम्स ऑफ X, राइट। देन -X TA/TC इनिशियल एंड माइनस X टाइम्स ऑफ TA आउटर इनिशियल। नाउ ऐड जो है हम अपने तरफी से +X +Y टाइम्स आर्म का भी रिवॉल्यूशन कंसीडर, X +Y, Y माइनस TA/TB, Y minus X TA/TC and Y plus X TA/TD, TC not by TC initial। Now after that we get the equations. So we know TA is equal to 20 number of teeth, TB is equal to 30, TC is equal to 80, so be inside, TC outer 100 teeth, TD 20। Speed of the arm side sonium, speed of A 300 rpm, speed of T is to be unknown. Then speed of arm is equal to 0, which is the value over the y. On that node we have y plus x is equal to 300, क्योंकि यहाँ पे speed of A is equal to 300, therefore x is equal to 300 rpm, क्योंकि हमारा y तो शून्य है। On that contrary node, the last pair of this, which is to be a ND over here, so the value of ND y plus TA TC initial by TD TC initial, so 300 TA 20 initial 80 100 and TD 20 मर गए 8 नॉट by TI। 100 by 80, 375 यहाँ तक कारवा पहुँचता है, राइट।
सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट फिट बैठेगा? इट्स चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 31। क्या बोलना चाह रहा है लेखक? बोल रहा है लेखक, a carpenter glues a pair of cylindrical wooden legs by bonding their end faces at an angle of 30 degree as shown in figure. 4 megapascal log 1 and 30 degree angle over this, जो कि हम लेते हैं। Glue used in interface fields the maximum normal stress 2.5 megapascal and maximum shear stress is 1.5 megapascal. Assume interface fails, the lock fails. When the uniform tensile stress is 4 megapascal is applied, the interface fails only because of criteria 1, fails only because of criteria 2, fails because only criteria 1 and 2 does not fail. So अगर मैं सिग्मा एन देखता हूँ तो विच इज सिग्मा स्क्वायर कोस ऑफ स्क्वायर थीटा होता है। 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा ओनली का होता ना, कॉस 30 का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 3/4 3 मेगा पास्कल whose value is greater than 2.5, तो 1 तो नहीं फॉलो अप करता है। टाउ की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 साइन ऑफ 2 थीटा, तो 4/2 साइन ऑफ 60 डिग्री 1/√3 √3 1.732 मोर देन द 1.5। दूसरा भी गया तो दोनों जो है केस फेल हो गया। ऑप्शन नंबर सी जस्टिफाइबल हो गया। नाउ मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Self aligning ball bearing has a basic dynamic load rating T10 for 10 raised to power 6 revolutions of 35 kilonewton. If the equivalent radial load on the bearing 45 kilonewton, expected life is 10 raised to power 6 revolution is below 0.5, 0.5 to 0.8, 0.8 to 1 and above this। अगर हम बेरिंग लाइफ देखते हैं तो C अपॉन इक्विवेलेंट लोड की पावर n, n की वैल्यू जो है फॉर द बॉल बेरिंग के लिए 3 होती है एंड आपका रोलर बेरिंग के लिए 10/3। यहाँ पे आपका बॉल बेरिंग दिया हुआ है तो हियर 35 अपॉन 45 क्यूब 10 raised to power 6 whose value 0.47 10 raised to 4 revolution। So in a revolution we have below 0.5, alpha is your wise choice for this। ball bearing के लिए n की वैल्यू 3 एंड रूलर बेरिंग के लिए n की वैल्यू 10/3। छोटी चीजें हैं लेकिन याद रहेंगी तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मूव करते हैं। अ टैंक ओपन एट द टॉप with a water level of 1 meter as shown in the figure as a total as a whole of height 0.5 meter. Free jet leaves horizontally from the smooth hole, the distance x where jet strikes to the floor 1 meter and 0.5 meter पे आपका discharge हो रहा है। So here on the side square root of ch velocity, so 2 into g into 0.5 which is the square root of g। एंड अगर मैं प्रोजेक्टाइल देखूं, इसको प्रोजेक्टाइल देखूं इसका कहाँ से कहाँ तक बन रहा है तो इसकी फ्लाइट टाइमिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2g 2h ओवर दी g टाइम्स h है 0.5 मीटर हाइट से गिर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी फ्लाइट टाइम हो जाएगी 1/√g। तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन स्क्वायर रूट ऑफ g into 1/√g।
it is to be a 1 meter. It's a Bombay. नेक्स्ट में हूँ बिलोंग करते हैं 34th नंबर में. इन अ Lagrangian system, position of fluid particle in a flow is described as x is equal to x naught e की power minus kt, y is equal to y naught e की power kt, where t is the time while x naught y naught k are constant. Flow is unsteady and one dimensional, steady and two dimensional, steady and one dimensional, unsteady and two dimensional. Okay, on that note, x and y. देखो हमको पता है u is equal to del x by del t and v is equal to del y by del t, right? So u is equal to del x by del t x naught a sorry k e की power minus at and v is equal to del y by del t is to be k y naught e की power kt, right? Up to the mark over here दोनों is not equals to 0 के बराबर है. So लो कैसा हो जाएगा, u is equal to minus k times of x and v is equal to k times of y. तो लो हमारा दिखेगा in a single way. Steady and two dimensional. Right choice for this. Now come along for the next question, 35th. Here the maximum reduction in cross-sectional area pass of a cold wire drawing process is R1 minus e to the power minus n plus 1 and represent the strain hardening coefficient for the case of perfectly plastic material R is. Okay, on that note we have the blank canvas over here. So the condition R is equal to 1 minus n plus 1. So perfectly plastic material. Plastic material n is equal to 0. So the value of R 1 minus e raised to power n की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 मतलब 1 माइनस 1 का इनवर्स which is equals to 0.632. So whose value is to be correct one? Del. Now next question, easy peasy. Percentage scrap in a sheet metal blanking operation of a continuous strip. Sheet metal as shown in the figure is. Here the feed is to be there d by 5 चारों तरफ से कटिंग का है. Then the we have to find out what the strip कितना बच रहा है, मतलब एक ब्लैंक एक तरह से हट जा रहा है. और अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ इनके सेंटर पॉइंट से यहाँ ये वाला लॉग, तो आपको एक जो है सिंपली कटिंग दिखेगी लॉग के अंदर की कुछ इस तरीके से. अगर दिखाना चाहें तो एक लॉग होगा और
ये सर्कल के दो हाफ्स है जो कि कट कर रहे हैं। ठीक है। ऑन दैट नोट, तो ये दोनों हाफ हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, तो इसे मैं ABCD के नाम से नोटेड डाउन कर देता हूँ। अगर मैं इसे कुछ इस तरह से डेलिबरेटली देखता हूँ तो AB इज इक्वल टू D/2, D/2 प्लस D/5, ये मुझे देखने में आता है पिक्चराइज, है राइट। तो इसकी वैल्यू 6D/5 निकल के आती है। एंड CB देखता हूँ तो D/5, D/5 प्लस D, whose value 7D/5। एरिया ऑफ क्रैप देखना है, तो 7D/5, 6D/5 माइनस पाई/4 D²। क्यों? क्योंकि जो है बाकी तो स्क्रैप है, मतलब रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में से एक दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बना, तो पाई/4 D² टोटल डाया है। So here on that note we have the 0.9 times of D², area of rectangle, area of rectangle, whose value is to be ABCD, which is 1.68 D². So the percentage of scrap is equal to 0.9 times of D² upon 1.68 D², 53.6 percentage. So option number, not the option, fill in the blank. 53.6 percentage, two decimal places, 5360 point. Now move along. Have the next question over here. An explicit forward Euler method is used to numerically integrate the differential equation dy/dt is equal to y using a time step of 0.1 with the initial condition y0 is equal to 1, value of y1 computed by this method is correct up to two decimal places is to be over here। तो कुछ नहीं, आपको जो है यूलर मेथड में वैल्यूज पुट करते आना चाहिए, बस उसी का ऑपरेशन बार बार आप दोहराओगे। नाउ here dy/dt is equal to y and y dash is equal to y, t is equal to 0, y naught is equal to 1, h यूनिट जो डिस्टेंस है वो 1 है। तो द अकॉर्डिंग टू द यूलर y and h function of e and hn, तो द yn plus h of yn, y of 0.1 के वैल्यू, मतलब y1 it is the y naught plus h of y naught 1 plus 0.1 into 1, 1.1, y of point मतलब y2 1 plus 0.1 into 1.1, 1.21, y of point 3 the y3 1.21 plus 0.1, 1.21, so 1.21
331, y of 0.44, 1.331, 0.1, 1.331. It is to be 1.4641, y of 0.5, y of 5, whose value is to be 1.4641 plus 0.1 into 1.4641, it is to be 1.61051, y6 is to be 1.61051, 0.1, 1.61051, 1.771561, y of 0.7, y7 1.77561, 0.1 into 1.771561, whose value is to be 1.9487171, y of 0.8, y8 1.9487171.1, 1.9487171, whose value is to be 2.1435881, y of 0.9, y9, y9 is equal to 2.14357 888, 1 plus 0.1, 0.1435881. Its value is to 2.35947,691, and y of 1 equal to 2.357947 plus 0.1 into 2.33357,947, 2.59374246. So exactly y की वैल्यू 2.59 this. Okay, 0.59 is your final answer. Next, here the fs is the Laplace transform ft to t square e की power minus t. So f of 1 is to be asked over here. Okay, so here Laplace e की power n factorial n upon x की power n plus 1, Laplace e की power at 1 upon s minus a. So total Laplace of t power n e की power at factorial n upon s minus a की power n plus 1, fs Laplace of function of transfer 1 times of Laplace square e की power minus t. So here into Laplace 1 का स्क्वायर मतलब फैक्टोरियल 2 s plus 1 का पावर 2 plus 1. So here O upon s plus 1 का क्यूब एंड एट द वैल्यू 1 पे देखना है 4 1 plus 1 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 1 by 2 is equal to 0.5 is your final answer. Next question here
क्या बोल रहा है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम विड्थ 100, हाइट 200 millimeter, length 4 meter is carrying uniformly distributed load at a density 10 kilonewton. Maximum bending stress in the beam. Okay, so Mmax on the UDL support is to be WL square by 8. ये किस केस में है? SSB सिंपली सपोर्टेड बीम का छुटका सा जो है हम लिखते हैं, एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड के बराबर सेक्शन मॉडुलस। डायरेक्टली अगर रेक्टेंगल है तो 6m बाई बी डी स्क्वायर, डायरेक्टली सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हियर वी हैव 3 इंटू 10 इंटू 4000 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 200 का स्क्वायर, 30 न्यूटन पर square, which is 30 megapascal. Next question we go through. A machine of mass m 200 kg is supported on a two mounts, each of a stiffness 10 kilonewton per meter. Machine is subjected to an external force N Ft 50 cos 5t, assuming only vertical translatory motion. Magnitude of dynamic force in Newton transmitted from each mount to the ground is in blank. Here the value of F is to be over here, residing over here. तो हमको एक चीज पे यहाँ पे फोकस करना है क्वेश्चन में। आपका मशीन तो माउंटेड हो, ट्रांसलेटरी मोशन भी, डायनेमिक फोर्स माउंटेड ऑन द ग्राउंड पे कितना आपका लगाएगा। सो ट्रांसमिसिबिलिटी एफ टी बाई एफ नॉट, which is square root of 1 plus 2 zeta omega by omega n का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा ओमेगा n का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस zeta ओमेगा बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर। नाउ हियर दो स्प्रिंग है, तो ये दोनों कैसा कनेक्शन है? पैरेलल। तो ओमेगा n क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाई m, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो whose value square root of 2 10 2000 by m under 10 रेडियन पर सेकेंड। अगर हम इक्वेशन देखते हैं, एफ टी इज इक्वल टू 50 कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 5 निकल के आती है। तो आर इज इक्वल टू 5 बाई 10.5 डायरेक्टली, and theta value, there is no damper over here, so it's directly 0. तो ट्रांसमिसिबिलिटी हमें रिसीविंग एंड पे सिर्फ ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर रिसीव होती है, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर विच इज 1.33। एफ टी की ओनली वैल्यू इज इक्वल टू 50, क्योंकि फोर्स है ये अपने पास, इंटू 1.333, 66.67 न्यूटन। बट यहाँ पे दो दो वो लगे हुए हैं इनके बॉडी, तो सिंगल ट्रांसमिटेड देखना है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, सिंगल, तो 66.67 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 33.33 न्यूटन। इट इज द फाइनल आंसर। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डायनेमिक एनालिसिस। हियर द क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड, a slider crank mechanism shown in the figure at some instant
crank angle 45 degree and force of 40 Newton. Acting towards the left on the slider, length of the crank is 30 millimeter and connecting rod is to the 70 millimeter. Ignore the effect of the gravity, friction and inertial force. The magnitude of crankshaft torque needed to keep the mechanism is in equilibrium is to be asked over here. ओके, फोर्स यहाँ से लग रहा है, बॉडी को नाम दे देते हैं, ये बेस सी। ओके, सी पे तो आपका पिस्टन है। हियर द एंगल इज टू बी अ बीटा ओवर हियर, द परपेंडिकुलर सेगमेंट, देयर इज टू बी एंगल बीटा। ओके, हियर सम फोर्सेस ओवर हियर, यहाँ पे एफ पी पिस्टन फोर्स ओवर हियर। ग्रेविटी, तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क देखता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इन piston force, sine of beta plus sine of theta multiplied with radius r. Piston force 40 kilonewton, 40 only newton, and आपका angle 45 degree, radius 30 millimeter, length over the connecting rod is 70 millimeter. बीटा अननोन पर्सनालिटी ABC देखेंगे, ABC, तो क्या दिखेगा आपको? 30 साइन 45 इज इक्वल टू 70 साइन बीटा, बीटा वैल्यू 17 पॉइंट, बीटा इज इक्वल टू 17.64 डिग्री, right? And the value of torque over here, cos of 70 64 sine of 62.64 times of 03 1.12 nm, ये हमको फाइनली टॉर्क क्यू की वैल्यू प्राप्त हो। इजी, बस फॉर्मूले का खेल है, आता है तो बहुत आसानी से। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर, खेतों की सिंचाई भी कर लो भैया। A sprinkler shown in the figure rotates about inch point in a horizontal plane due to water flow discharge through its two exit nozzle, Q upon 2 and Q upon 2, 10 and 20 centimeter. Flow rate of O to the sprinkler is 1 liter per second and cross-sectional area of each exit 1 centimeter. Assuming equal flow rate through the both arms and a frictionless hinge, the steady state angular speed of rotation in radian per second of the sprinkler is correct up to a 2 decimal places. Ask. So move ahead for this. Here we know the accelerated velocity, ये का relative velocity and आपका RA naught radius in omega, which is 5 plus 0.1 omega, velocity at b times bb of the relative RB naught, ये हो पॉजिटिव डायरेक्शन में निगेटिव, तभी तो स्वेल होगा। दोनों सिमिलर साइड चलेंगे तो वो तो मिलेगा ही नहीं। तो इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ
VA minus mass flow. Here the Q value 1 liter per second charge 1000. Alright, here VA upon A value AR AR equal to 1000 upon 5 per second, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली अमाउंट में. तो मास फ्लो रेट ऑफ A equal to mass flow rate of B, which is rho Q by 2. On that note, have 0.1 in 5 plus zero point 0.1 omega, zero point 2, 5 minus zero point 2 omega. So 0.5 omega value is equal to 5. So omega 10 रेडियन पर सेकंड कैलकुलेट करना था. तो 10 रेडियन is the angular velocity. Next, 43rd number. A solid block of 2 kg mass slides steadily at a velocity v along a vertical wall as shown in the figure below. A thin oil film of thickness h 0.15 mm provides the lubrication between the block and the wall. Surface area of the face of the block is contact with the oil film is 0.04 meter square. Velocity distribution within the oil film gap is linear as shown in the figure. Take the dynamic viscosity of oil as 7 into 10 raised to power minus 3 Pascal second. Acceleration due to gravity as 10 meter per second. Neglect the weight of oil. Terminal velocity V on the block is to be a 1 decimal. Here the block is to be there to make per 2 kg H 1.15 millimeter. Yeah, the wall is to be. अगर देखें यहाँ साइड आपका फोर्स लग रहा है, weight on the downward, right? Here stress mu a v by so mu v by h, right? And force mu v by h to a. A की वैल्यू 0.04 square is to mass of the block kg, gravity 10 meter per second square, h value is 0.15, viscosity 7 into 10 raised to power minus Pascal second. Okay, so the shear flow of the block is equal to weight of block. So tau times of mg, so mu times of v by h into a mg, so 2 into 10, 7 into 10 minus 3 v into 0.04 upon 0.15 10 raised to power minus 3, v value 1071 percent. Okay, easy as you like. Next, 44. A tank of volume 0.05 meter contains mixture of saturated water and steam 200 degrees Celsius. The mass of the liquid present is 8 kg. Entropy of the mixture, property of data
saturated steam and 1.5538. If value is to be given, Pg, SFG and SF value, right? So here picture का calculate कर लेते हैं. Here S is equal to SF plus X times of SFG. X dryness fraction, mass of vapor, the mass of vapor plus of fluid, Hg plus Hf. So we know that the volume V is equal to mf Vf Vg. We have the value for 0.001157 meter cube and Vg equal to 12736 meter cube. Here the value is to total F plus directly this here 8 multiplied 0.001157 plus the 0.12736 is equal to 0.5. So the mg वेपर का मास 0.32 kg निकल के आना है. ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.32 अपॉन 8 प्लस 0.0385. यहाँ से हमें एंट्रोपी की 0.3309 प्लस 0.035 into 0.104.480 kg. Easy. Next question. Steam flows through a nozzle at a mass flow rate 2.1 kg per second with a heat loss 5 kilowatt. Enthalpies at inlet and exit 2500 kilojoule per kilogram and 2350 kilojoule per kilogram respectively. Assuming negligible velocity at the inlet, C1 is equivalent to 0 and velocity C2. Steam in meter per second. Nozzle exit is 2500 and 2350. Okay, so we know according to that steady flow energy equation से दिखेगा H1 E1 square by 2 Z1G plus Q is equal to H2 V2 square by 2 Z2G plus work done. यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो Z1 is equal to Z2. नोजल का केस 2500 minus 5 upon 150 V2 square by 1000. यहाँ पे मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय यूनिट बैलेंस करने के लिए है. P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 447 पॉइंट. बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, सब फिंगर टिप पे रख सकते हो इन सब क्वेश्चंस को. Now an engine working on a air standard auto cycle is supplied here
0.1 megapascal and 35 degrees Celsius. Compression ratio is 8. Heat supplied 500 kilojoule per kilogram. Property of air 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. PV value R. Maximum temperature of the cycle is to be asked over here. हम तो पता है सब काम करते हैं। यहाँ पे साइकिल कौन सी है? ऑटो साइकिल। हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम T2 के बीच में। ऑन दैट नोट T2 by T1 एडियोबेटिक कंडीशन से हम जानते हैं V1 by V2 की पावर which is R raised to power of gamma minus 1. Now we have all the values over here. So T2 is equal to 308 into 8 raised to power 0.4 707.6 Kelvin, and value of here T3 minus T2 into CV Q value. तो Q कितना है? 500 किलो जूल पर किलोग्राम। 0.718 into T3 minus T2 आया 707.6. So the T2 after calculation is to be highest temperature 140 Kelvin, which is 11. चलिए क्वेश्चन में मूव अलोंग करते हैं। 47 नंबर। A plain slab thickness L and the thermal conductivity K is heated to a fluid, one side P and the other side Q maintained at constant temperature 25 degrees Celsius. On the figure, fluid is at 45 degrees Celsius. Surface heat transfer coefficient 10 watt per meter square Kelvin. The steady state temperature Tp of the side which is exposed to the fluid, 2 decimal is the H T infinity Pq values dot delta T by summation R theoretical task 1 by J plus L by conduction और convection resistance का mixture, बट यहाँ मीडिएटर का काम कर रहा है। तो इक्वल टू बाई L by K कंडक्शन T infinity Tp by Ha 1 upon Ha convection resistance, तो 45 minus 25 upon 1 upon 10.25 is equal to Tp minus 25 1 upon 0.25 whose value Tp 33.9 in degrees Celsius. इजी, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलोंग कर 48 नंबर बोल रहा है द ट्रू स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन डायग्राम strain hardening material shown in the figure. First, there is a loading up to a point A up to a stress 500 megapascal and the strain 0.5.
Then from a point A, there is a unloading up to a point B to stress 100 megapascal given that the Young's modulus 200 GPa. Natural strain at a point P epsilon B correct up to a 3 decimal places देखना. So here stress strain दिया हुआ है A से B, B से C से D. तो अगर आपको दिख रहा है, ये हमें भी दिख, ये बी सी 0.5 एप्सिलॉन बी की कैलकुलेट करना है तो 0.5 से नीचे होगा, इतना तो कंफर्मेशन हो गया. बाकी वैल्यू आपके स्लोप से निकल जाएगी. 500 माइनस 100 बाई 3 200 10 के 400 बाई BC. BC is equal to 0.00 and epsilon B is to be 0.5 minus 100 2 is to be 498. 0 point is your easiest possible correct way. Next, an orthogonal cutting operation is being carried out in which uncut thickness is 0.01 millimeter, cutting speed is 130 millimeter per minute, rake angle 15 degree and width of cut is 6 millimeter. Is observed that the chip thickness 0.015 millimeter, cutting force 60 Newton and the thrust force 25 Newton. Ratio of friction energy to the total energy is to be asked over here, stated. So on that note, FC value 60 Newton, FT equal to 25 Newton, and velocity V is equal to 130 meter per minute. FC is equal to FC sin alpha plus FT cos of alpha. 60 sin of 15 degree, 25 cos 25 cos 15 degree, whose value is to be 39.667. Now BC by sin of phi cosine of phi minus alpha. तो phi कैलकुलेट करने के लिए tan phi और cos अल्फा 1 माइनस r sin अल्फा. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की है 37.9, r is equal to TC uncut 0.01 0.05. Now the VC by V value is to be sine over the 37.92 upon cos 37.92 15. So 667. Energy ratio FBC by FCV. So here all the values we have. So 39.66677 upon 0
0.66 to be 0.4408. Next, a bar is compressed to half of its original length. Magnitude of its true strain produced in the deformed bar is to task. Okay, allow epsilon log of final length to the initial. We have the LF is equal to condition half of its original length 1 by 2, मतलब log of 1 by 2 की ही वैल्यू निकालनी है 0.69। तो log 2 की तो याद ही होती है, बस 1 by log 2 की ही निकालनी, आ गया आसानी से। नेक्स्ट, minimum value of 3x plus 5y such that here the equations to be stated over। देखो आपको जो है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 प्राप्त हो आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ये वाला इस तरह से बाउंडेड रीजन होगा। बाउंडेड रीजन के बाद जो है आप जब बनाओगे इक्वेशंस तो आपको दिखेगा। राइट, हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकलते हैं, एक्स और वाई दोनों 0 पे निकाल लोगे ओरिजिन पे। हियर प्रोसेसिंग टाइम including the setup time, due dates for a 6 jobs waiting to be processed at a work center are given in a table. Average tardiness using the SPT rule correct to the 2 decimal places is to be asked over। 5 जॉब। सबसे पहले तो इनका आपको वो देखना पड़ेगा, क्या अरेंजमेंट। ये जॉब फिनिश हो जाएगा ए डी ई बी डी एफ। नाउ द प्रोसेसिंग टाइम 3 4 5 7 9 13। लिखा अरेंजमेंट, इसी हिसाब से हुआ है अरेंजमेंट सीक्वेंसिंग। नाउ द ड्यू डेट इज टू बी 8 ओ 17 16 18 19। अभी तक कुछ भी वो नहीं, अब होगा जॉब फ्लो टाइम प्लस 3 इक्वल टू 3। टार्डीनेस नहीं है, 0। फिर 3 प्लस 4 7 और यहाँ 3 है तो टार्डीनेस, देन 7 प्लस 5 12, यहाँ 17 0। 12 प्लस 7 19, यहाँ पे 16 है तो 3 मिनट में टार्डी। 19 प्लस 9 27।
यहाँ पे 18 है, 19 + 9 28, 10 का टाड़ी है, 28 + 13 41, यहाँ पे 19 है, 22 मिनट। तो हियर द tardiness टोटल सम कर दो, 3 + 3 + 10 + 20, 38 मिनट का डिले रिस्पॉन्स, तो इट इज to 38. Tardiness is to total tardiness, so divided by number of jobs, divided by number of jobs, so it is to be a 6.33. Average tardiness is equal to total tardiness by number of jobs. All right. Next question. Yeah, the systematic of an external drum rotating clockwise engaging with a short shoe shown in the figure. Shoe is mounted at point Y, rigid lever XYZ, rigid at point X. Force F 100 Newton is applied at a free end of the lever as shown. Given that coefficient of friction between the shoe and drum is 0.3, braking torque applied on the drum is, here the 300, 200, X and Y is to be asked. तो अपने को पता है भाई, अगर इस पे लग रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एंड एक जो है फ्रिक्शन फोर्स आएगा. नाउ दो द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस, है ना. अगर हम समीशन ऑफ मूवमेंट x इज इक्वल टू 0 लेते तो आपका जनरली फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस 300 200 ऑल्सो टोटल डिस्टेंस 300 प्लस फ्रिक्शन फोर्स F इनटू 100 rotation and normal force in 200 is equal to 0. Here F की वैल्यू कितनी, 100 न्यूटन, 100 friction force Rn. So here 300 plus 0.9 minus 2 times normal is equal to 0. Normal force 7.72 लीव होगा. फ्रिक्शन फोर्स U times Rn 0.327.7 Newton. Torque is equal to 81.6 multiplied with 100 10 raised to power minus so the value is B finally 8.18 Newton per torque. very आसान. Here the block P mass 2 kg slides down on a surface has a speed 20 meter per second. Lowest point Q where the local radius of curvature 2 meter as shown in figure. Gravity 10 meter per second square. Normal force in Newton of the Q is to what is to be यहाँ भी हो तो
आपका फोर्स काम कर रहा होता है, mv² r, velocity on 20 एंड देखो कर्वेचर का 2 मीटर, acceleration is equal to v by r, force is equal to ma, normal force mg plus mac, मास कॉमन लेंगे g plus acceleration which is 2 10 plus 20 by 2, 420 न्यूटन हमें जो फोर्स मिल रहा है वो बताना है। आसानी से आ गया ना, आसानी होता है बस को दृष्टिकोण सही करना होता है। An electrochemical machining is to be used. Cut a through hole into a 12 millimeter thick aluminum plate. Hole has a rectangular cross section 10 mm and 30 mm. The ECM operation will be accomplished in 3 minutes. Efficiency 90%, assuming a specific removal rate of aluminium 3.44 into 10 raised to power minus millimeter cube per ampere second. Current is required. So the specifically for the ECM specific volume current into time for the melting into efficiency is 3.44 into minus current 120. So the value of current 968.992 ampere, and efficiency into material volume removed by current in time, which is to be area multiplied by current thickness of the metal. So here 969.9 the word answer. सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। पीएम क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।